say that is not your variant basically. ये दूसरा variant है, yours is 22. So this is another variant for October November 2021. So before reading the data response or before attempting the data response, um, it is better for you guys to read the questions. सही है, ताकि आप keywords को underline कर लो. और इसके अलावा जो है ना, जो शुरू के डेटा रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली जो 2 मार्कर्स होते हैं, उसमें आपको डेटा रिस्पॉन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती. यूजुअली कोई टेबल वगैरह होता है, कोई एक्सर्ट होता है, उसमें से आपको बताना होता है, या कोई डेफिनेशन होती है. सही है, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो. Question number 1, explain how inflation can halve the real value of money. Question number B, with the aid of a diagram, explain why rapid price rises encourage panic buying by consumers, creating shortage that further increases the inflation. If the economy is experiencing hyperinflation, yeah, inflation rate बहुत ज़्यादा है, so how can you show that there will be a shortage and consumers will be buying more goods and services? Part C is with reference to one function of money. Explain why hyperinflation in Zimbabwe caused the country to abandon its currency. सही है, आपने with reference to one function of money. Remember, हमारे पास 4 functions of money होते हैं: medium of exchange, standard of mode of deferred payment, store of value, unit of account. उनमें से आपने एक बताना है कि किस तरह से आप उसको use करोगे, and how hyperinflation has led to Zimbabwe's economy to abandon their own currency. Part D is using ADAS analysis, discuss whether it is possible to use monetary policy to achieve both a high level of investment and a low rate of inflation. Using both, आपने AD AS दोनों को यूज करते हुए क्या बताना है? Whether it is possible for them to use monetary policy to achieve both, investment भी आपकी इकोनॉमी में ज्यादा हो and inflation rate भी low हो जाए. And part E is discuss, this is your keyword, whether everybody in an economy such as Venezuela would be worsen off as a result of hyperinflation. So अगर आपके hyperinflation है, so whether everyone will be worsen off or not. सही? Are we good? So let's go back to the data response. Central banks aim to keep inflation under control, but what does under control mean? How much inflation is too much? And a question only an economist could ask: how much inflation is too little? Hyperinflation, where the rate of inflation is extremely high, is an economic catastrophe. For country table 1.1 below gives detail for of 4 cases of hyperinflation. सही है, हमारे पास 4 economies हैं: Hungary, Zimbabwe, Germany, and Venezuela. Data is from 1945 to 46, 2007 to 8, and these are highest monthly rate of inflation. ये Zimbabwe का है, ये Hungary, Zimbabwe, then Germany, and then Venezuela. Time taken for the prices to double: 15 घंटे, 25 घंटे, 89, 430. तो अभी तक आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ये है कि मनी वैल्यू किस तरह से हाफ हो जाती है, आपको उसका अंदाजा हो गया होगा. सही है, कि इफ द प्राइसेस आर इंक्रीज बाय डबल, अगर प्राइसेस आपके 100% से बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, द रियल वैल्यू है मनी की, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मनी कैन बाय, इज हाफ. जैसे जिम्बाब्वे में 25 घंटे में हाफ हो गई. Moving forward, the consequences of hyperinflation are far-reaching. Inflation undermines the functions of money. Rapid price rises encourage panic buying by consumers, creating shortages that further increase inflation. In the most extreme cases, countries stop using money completely and resort to barter. In Zimbabwe, hyperinflation led to the abandonment of its currency in 2008 and the use of US dollars as an alternative. More recently, Venezuelan restaurants and supermarkets stopped displaying prices, and consumers only found out that the value of their purchase at the checkouts. To avoid the consequences of high inflation, central banks often set a low target rate of inflation, typically around 2% a year. But this policy has also been criticized by some people. And central bank follows such a target, the outcome would be to erode the real value of money over time. Central banks
have often been instructed by the government to have an inflation target, and yet even a 2% inflation rate will halve the real value of money in 36 years. Central banks can use high interest rates as a tool of monetary policy to keep down the rate of inflation, but very often monetary policy requires low interest rates to stimulate consumption, spending, and investment in an economy. It should not be forgotten that there are potential benefits of relatively low levels of inflation, and this is why some countries have an inflation target of, say, 2%. A former chief economist of an IMF even suggested that many countries' inflation target should be 4 rather than 2%. Say, so this is your data. Now, moving back to part A. Part A कहता है explain how inflation can halve the real value of money. So पहले आप बताओगे कि what is real value of money and how the real value of money can go down by 50%. Since it's a 2-mark question, तो आपने 2 reasons बताने. So you can explain real value is the value measured in terms of goods and services, goods or certain product that money that can be bought. सही. अब half कैसे हो रही है? If prices are increasing by double, then real value of money will fall by 50%. Say, so 1 mark for the explanation of what is real value and 1 mark कि वो किस तरह से half हो रही है. Moving to part B, with the aid of the diagram, explain why rapid price rise encourage panic buying. हाँ भाई. क्या होगा if there is a panic buying or if there is negative consumer confidence in the economy? अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने आपको ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई. सही है. तो आप इस चीज में क्या कर सकते हैं, यू कैन आइदर गो फॉर एग्रीगेट डिमांड एंड जो आपका एडीएस मॉडल होता है वो भी बना सकते हो, या माइक्रो लेवल की कोई सी भी डायग्राम बना के बता सकते हो कि पैनिक बाइंग किस तरह से रिजल्ट्स इन हायर प्राइसेस. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ रही है, then this is your price level, जो real GDP. Aggregate demand will shift out because consumption in your economy is increasing, leading to the macroeconomic equilibrium to shift from point A to point B, and as a result the price level will go up. सही है. तो आपके यहाँ अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आपके यहाँ प्राइस लेवल बढ़ जाएगा. या तो आप ये इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और यू कैन डू इट for a particular good as well. This is your initial demand and supply, and if there is panic buying, demand for the good will shift outwards, resulting in shortage of QD minus Q naught, which will lead to a new equilibrium at point B at higher price level, at higher price for this good, and the quantity will be at Q1. तो आप कोई सी भी डायग्राम बना के एक्सप्लेन
कर सकते हो, that is perfectly fine. Are we good up to here? लेकिन एक ही बनानी है, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ADAS वाली भी बना दो और वो भी बना दो। तो एक कोई सी भी डायग्राम बना के आपने दिखाना है कि पैनिक बाइंग किस तरह से कंजम्पशन को इंक्रीज करेगी, शॉर्टेजेस को और फर्दर इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगी। सही जी। नाउ मूविंग टू पार्ट सी। पार्ट सी क्या है भाई? विद रेफरेंस टू वन फंक्शन ऑफ मनी एक्सप्लेन व्हाई हाइपर इन्फ्लेशन कॉज द कंट्री टू अबंडन इट्स करेंसी। अब एक फंक्शन ऑफ मनी को आप यूज करते हुए बता सकते, सही है। सो लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर medium of exchange. So first you will explain what is medium of exchange. Medium of exchange is a function of money, which basically illustrates that you will use a currency as a legal tender if it is acceptable mode of payment. सही है। अब medium of exchange किस तरह से violate होगा? If there is hyperinflation in your economy, people will reject the local currency because it is losing its value rapidly during hyperinflation. So इसी तरह से if you are going for unit of account, so you can explain that what is unit of account. Unit of account means that basically you will use money in order to place a value on goods and services. So if there is hyperinflation, then the value will be increasing very rapidly. It will be going up, which means basically जैसे आपके यहाँ वहाँ पे हो रहा है जिम्बाब्वे में कि लोगों वेनेजुएला में कि rather than listing or putting up a price list, what people are doing is that they are finding out what is the value of their goods and services at the checkout counters. सही है। तो यूनिट ऑफ अकाउंट भी आपका seriously violate हो जाएगा। इसी तरह से you can explain store of wealth. And since money can be used as or in order to store wealth, but since the price level is increasing or it takes only 36 years, if the rate of inflation is even 2%, for your store of wealth to be half. सही है, क्योंकि प्राइस लेवल जो आपके वो 100% से बढ़ जाएंगे। तो आप कोई से भी फंक्शन ऑफ मनी को एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि हाउ it has been violated by hyperinflation. So it can be unit of account, it can be standard of deferred payment. Like for example, people would not exchange the currency or would not take allow transactions to be carried out on credit basis because of rising price level. सही, तो कोई सा भी एक बता दो और उसकी explanation. Now moving to part D. Using aggregate demand and aggregate supply in analysis, discuss whether it is possible for the to use monetary policy to achieve both high level of investment and lower rate of inflation. हाँ जी, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है यहाँ? Which type of monetary policy are they indicating towards, which will encourage high investment and low rate of inflation? इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगी?
How will investment increase through monetary policy? कौन सी monetary policy आप लगाओगे? Expansionary, contractionary? Good job. Expansionary monetary policy लगाओगे. So first you will explain what is monetary policy. Monetary policy is the use of interest rates and money supply by the government in order to influence the aggregate demand. सही है? So अगर आपने expansionary monetary policy लगाई, it will encourage investment in the economy for sure. The price level will go up from point A to point B because you are using expansionary monetary policy by reducing the rate of interest. The government is encouraging investment in the economy. लेकिन उसके साथ साथ वो क्या बोल रहे हैं that the rate of inflation will be going down. लेकिन यहाँ तो rate of inflation बढ़ रहा है. Basically your macroeconomic equilibrium is moving from point A to point B. But अगर आपकी जो investment है, if it is directed in the right channel, then it can increase your productive potential. And if the productive potential increases, then aggregate supply will also shift outwards. आपकी जो aggregate supply है वो भी shift out कर जाएगी. So just for example, if the AS shifts to AS1, then we will have the equilibrium at point C, where the price level will be P2 and the real GDP or the level of real GDP will be Y2. सही है. लेकिन ये कब होगा? ये होगा आपके लॉन्ग रन में ना. पहले आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई. It depends upon the magnitude too. Good job. It depends upon the magnitude. It depends upon the time frame. It depends upon how the people are perceiving reduction in the interest rate. Like for example, अगर आपकी state of the economy इतनी अच्छी नहीं है या business confidence इतना अच्छा नहीं है और आप interest rate को low कर भी देते हो, तब भी still हो सकता है कि वो monetary policy effective ही ना हो in order to increase your aggregate demand or in order to encourage investment in the economy. सही है. तो आप पहले ये बताओगे कि the short run equilibrium will move from point A to B. So the short term impact will be inflationary. However, in the long run, if the investment is channelized in the right way, then it can increase the productive potential, leading to a reduction in inflation. However, it depends upon the magnitude or the multiplier effect. So yeah, it depends upon production capacity या productive potential. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग रन में बात करें और हमारे पास if we get it through the Keynesian model and we have LRAS और हमारी जो full employment level of output है वो है YF. So अगर अब आप AD को increase करते हो, once the economy has reached full employment level of output, तब क्या होगा?
इट विल बी ओनली इन्फ्लेशनरी। आप लाख इंटरेस्ट रेट को नीचे ले जाओ, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कराओ, सिर्फ आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सही है। या अगर आपके यहाँ इफ यू आर वेल बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तब आपके इन्फ्लेशन होगा ही नहीं, मतलब सेम रहेगा। द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन विल बी stagnant at P naught. So these are the things that you can write in the evaluation of this government expansionary monetary policy. Are we good? Do you guys get it? By the way, ये LRAS वाली जो डायग्राम है ये बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपसे एक ADS एनालिसिस का पूछा हुआ है, तो आप सिर्फ वो ऊपर वाला देके भी बता सकते हो। Can we move to the next part? अच्छा जी, party क्या है? Discuss whether everybody in an economy such as Venezuela would be worsen off as a result of hyperinflation. So if the economy is experiencing hyperinflation, then whether everyone will be worsen off or not. Who will be worsen off? देखो, it will obviously जो आपकी local रियल वैल्यू ऑफ मनी है उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, तो आपके जो लोकल कंज्यूमर है दे विल बी वर्सन ऑफ, बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर नीचे जाएगी, आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो महंगे हो जाएंगे, सो एक्सपोर्टर्स विल बी वर्सन ऑफ। सही है। आपके यहाँ जो रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगी इनकम की, इट विल मेक पीपल हु आर ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज better off as compared to the users of the resources. सही है। There will be menu cost, shoe leather cost, ये सारी चीजें होंगी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी आपकी इकोनॉमी में, बट it can obviously lead to more profitability for the businesses. अगर businesses जो हैं, if they remain competitive, if they have switched to more efficient ways of production, have switched to cheaper suppliers, then obviously their profitability can go up. सही है। या अगर आपके यहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो रहा है, whether it is hyper or not, then your real GDP will increase, unemployment आपकी इकोनॉमी में लो हो जाएगी। सही। इसी तरह से जो borrowers हैं आपकी इकोनॉमी में, they will gain, because जब वो वापस करेंगे पैसे तो they will be better off. सही। तो there will be both the sides. Local consumers, because of reduction in real value of money, fixed income earners, इसी तरह से there will be shoe leather cost, there will be menu cost, there will be redistribution cost as a result of inflation. लेकिन उसके साथ साथ there will be positive effects as well. So for example, if firms that become more efficient will witness higher profitability. उनकी profitability बढ़ जाएगी because they are reducing their wastage, reducing the
raw material waste or etc., they will switch to cheaper suppliers. So yeah, it can make borrowers better off. So yeah, it can, if demand pull, then there will be lower unemployment. Once you have explained both the sides, you will then write your evaluation. To conclude, there will be some economic agents in the economy who will be better off due to hyperinflation, such as borrowers, or there will be economic agents who will be worsen off due to hyperinflation, such as exporters or domestic consumers. October, November 2021, same year hai, but the variant is different, which is 23. Now again, before moving to the data response, what is the drill? First read the questions. Use the data in figure 1.1 to describe how the contribution to real output growth of the different components of aggregate demand in China has changed from 2010 to 2017. Say आपके लिए आपको इसके लिए data response पढ़ने की जरूरत नहीं है. You just have to analyze the figure. Part B, what relationship might you expect between the rate of growth in real output and sale of new cars in the economy? Part B, consider whether the evidence in figure 1.1 and table 1.1 supports this relationship. जो relationship आपने identify किया in part B1. State one protectionist measure that may be adopted by US in the trade war with China, and explain what effect this would have on consumers and producers in the USA. तो आपने जो US के local consumers और producers हैं उन दोनों पे जो impact होगा उस trade का वो बताना है. Part D get discuss whether cuts in direct taxes would increase the demand for all type of consumer goods in China. Whether cuts in direct taxes would increase the demand for all type of consumer goods in China. Part D is discuss whether increasing domestic consumption is the best way for China to maintain growth in the real output at the current rate over the next few years. Say increasing domestic consumption is the best way for China to maintain growth in the real output. जो आपका real GDP है at the current rate for the next few years. So now let's first go back to figure 1.1. So भाई ये आपके पास figure 1.1 shows the growth in real output by components of the aggregate demand in China from 2010 to 2017. So ये भाई zero से below क्या था आपके पास net exports were around कोई -1 or -1.5, मतलब there was current account deficit. फिर उसके बाद investment expenditure था 0 से लेके अराउंड कोई 7%, एंड देन फ्रॉम 7 टू 12% तक हमारे पास था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सही है. फिर उसके बाद क्या होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आप देखो व्हाट इज हैपनिंग. एक तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है वो आपका पहले इंक्रीज हुआ. सही है. एज अ परसेंटेज टर्म्स इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट श्रिंक हुई. सही है. वन थिंग इज फॉर श्योर, जो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था एग्रीगेट डिमांड में वो श्रिंक हो गया बिटवीन 2010 एंड 2017. दूसरी चीज क्या हो रही है, जो आपके नेट एक्सपोर्ट थे x माइनस एम वो पहले नेगेटिव में थे. पहले नेगेटिव 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 एंड देन दे मूव टू पॉजिटिव, सरप्लस में आ गया. सही है. जो नेट एक्सपोर्ट थे दे मूव फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस. और जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, इट इज अराउंड को 7.5, ये 5% था. फिर 4.5 से लेके 10, 6.5 और 6,
5.5 and then again it was कोई 3% से. So जो consumer expenditure है वो around कोई it is pretty much the same 2.5 से 3-4-5% तक है. सही है. So पहली चीज क्या है, ओवर द इयर्स क्या हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं. सही है. सो फर्स्ट थिंग यू कैन टेल इज reduction in investment expenditure. एक ये पॉइंट आप बता सकते हो. दूसरा आप ये बता सकते हो कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट स्टेबल या ऑलमोस्ट सेम, और नेट एक्सपोर्ट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर रहा है. सही है. मतलब आपने जो है डेफिसिट से पॉजिटिव में चले गए हो. नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर moved from deficit to surplus. सही है. तो इनमें से कोई सी भी दो चीजें आप बता दो. वैल्यूज को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एस्टिमेशन ही है, तो अगर आप बताओगे भी तो देयर इज अ लाइकली वो के गलत हो जाए. So consumer expenditure, investment expenditure include both public sector and the private sector expenditure. So government expenditure is not shown separately. तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन्होंने सही सेपरेटली नहीं दिखाया, वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में ही आ गया. Table 1.1 shows the annual percentage change in the new car sales in China from 2010 to 2017. सही, ये आपके पास एनुअल परसेंटेज आ रही है. 33%, 5.2, 7.1, 15.7, 9.9, 7.6, 14.9 and then 2.4. सही है. सो आपने बताना है. उसके बाद in 2018 real output in China grew by 6.6%, its lowest figure this century. Many economists believe that the growth in China's real output will continue to be around this level over the next few years. In looking at to the future, the Chinese government has sought to restructure its economy. This has resulted in an increased contribution from domestic consumption, with less reliance on large-scale manufacturing in favor of quality manufacturing. For Chinese consumers, buying a house is the main priority, followed by purchasing a new car. Table 1.1 shows the annual rate of percentage change in the new car sales from 2010 to 2017. China's plans for maintaining its growth in the real output at the rate of around 6.6 are threatened by ongoing tension over the trade with the United States. These tensions provide a real threat to China meeting even its most pessimistic growth target for real output. Various studies have estimated the effect of the protectionist trade war with the US on the China's economy. These estimates are all negative and range from negative 0.6% to negative 1.4% का real output. So if they start a trade war with the US. So what relationship might you expect between the rate of growth in real output and the sales in new cars in the economy? हाँ भाई. क्या हो रहा है? इन दोनों फिगर्स को देखें आप. फिगर 1.1 और टेबल 1.1. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है ओवर द टाइम एंड जो आपका परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यू कार्स है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? देखो, जब आपका रियल आउटपुट था अराउंड कोई 12%, द नंबर इन 2010 the percentage of sales of cars is 33.2%. In 2017, when the real output is around koi 5.6.5, the percentage change in new cars is 2.4. तो अगर आपका real output जो है वो
परसेंटेज टर्म्स में नीचे जा रहा है, सही है, मतलब जो आपका ग्रोथ रेट है वो नीचे जा रहा है, तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ न्यू कार्स है वो भी नीचे जा रही है. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप क्या है? विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप might you expect between real output and the new cars? There is a direct relationship. Direct या positive relationship between both of them. Say part B2 क्या है? Consider whether the evidence in figure 1.1 and table 1.1 supports this relationship. अब आप quote कर दो, सही है कि for example in 2010 when the GDP or the real output was around 12%, the percentage change of the new cars was 33.2%. But as the growth rate fall and went to, sorry, it was 10% real output growth, and now it is kitna hai? 6.75 or 6.5, then the percentage of new cars is around 2.4%. Say, so when real output growth was around 10%, the annual percentage change in new cars was 33.2% in 2010. But when the real output growth rate went to 6.5%, the percentage change of cars is around 2.4%. Say, so there is a direct relationship. दो figures quote कर दो because it's a 2-mark question. आप दोनों बता दो कि जिस तरह से वो growth rate आपका fall कर रहा है percentage terms में, तो आपकी जो गाड़ी है वो भी fall करेगी, गाड़ियों की sales. State one protectionist measure that may be adopted by the US in a trade war with China, and explain what effect this would have on the consumers and producers in China. हाँ भाई, कौन सा trade war, कौन सी protectionist policy US can use? Since they don't have mentioned, they didn't mention any of the policy in the article, तो आप कोई सी भी लिख सकते हो, whether it is tariff, whether it is quota, whether it is export subsidies, any one you can write, and then you will explain the possible impact on the US consumers and US producers. Like for example, if they are imposing tariffs, then it will make the US consumers worsen off because the prices will increase, and their quantity consumed will fall, so there will be less choices available for the US consumers. However, for the US producers, they will gain because they will be protected. They will experience higher quantity being demanded of locally produced US goods. Part D get discussed whether cuts in direct taxes would increase the demand for all type of consumer goods in China. If there is a cut in direct taxes, so there will be higher disposable income. Say, and when there is higher disposable income, then whether all type of consumer goods will increase or not. सारे consumer goods की demand बढ़ेगी या नहीं? मुझे बताओ जल्दी से, whether the consumer goods will increase or not. Inferior की नहीं बढ़ेगी, सही है, तो जो भी आपके पास inferior goods होंगे उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी. So basically it depends upon the YED के जो भी normal goods हैं या जो भी luxurious goods हैं उनकी जो डिमांड है it will increase. So first you will explain impact of direct tax. Impact of cut in direct taxes that will lead to higher disposable income. If YED
is greater than 0, normal good, then demand will increase. However, if YED is less than 0, if the good is inferior good, then possibly the demand will go down. तो आपकी डिमांड जो है वो नीचे जा सकती है, सही है. इसके अलावा there are many other things that will also impact the demand. सही है, आपकी जो डिमांड है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करती है, such as for example consumer confidence, such as what is the rate of economic growth. सही है, so आप इसकी evaluation में क्या लिखोगे? However, consumer expenditure also depends on many other factors such as consumer confidence. अगर आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस शैटर्ड है या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लो है, आप लाख उसको कट कर दो डायरेक्ट टैक्सेस को, हो सकता है आपकी कंज्यूमर डिमांड ना बढ़े. या रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, रियल वैल्यू इरोड कर रही है, तो अगेन द डिमांड में नॉट गो अप. या इवन इफ देयर इज अ फॉल in employment rate, then also the demand may not increase. Discuss whether increasing domestic consumption is the best way for China to maintain the growth in real output at the current rate over the next few years. So now you have to explain whether if the China keeps this thing कि वो अपनी domestic consumption को increase करते रहें, सही है, तो आपकी rate of economic growth बढ़ेगा या नहीं. So first you will have to explain encouraging consumption will lead to higher aggregate demand in the economy. और जब higher aggregate demand होगी तो there will be higher real GDP, more employment. सही, तो आपकी जो रियल जीडीपी है वो बढ़ेगा, सही, लेकिन इट इज अ बेटर मेजर कि अगर आप अपने रियल जीडीपी को अपनी ओन कंजम्पशन से इंक्रीज करते हो, तो ये एक तरह से बेहतर है. क्यों? लेस रिलायंस ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स. सही, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा और आपको एक्सचेंज रेट वगैरह का मसला नहीं होगा, या आपको जो है ना वो ट्रेड वॉर्स वगैरह की वजह से आपका जीडीपी डिस्करेज नहीं होगा. लेकिन उसके साथ साथ देखो, आप कब तक अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करके अपनी जीडीपी को, अपने ग्रोथ रेट को स्टेबल रख सकते हो? आप until you have not reached the full employment level of output. अगर आप full employment level of output पे हो, say once you have reached the full employment level of output, then encouraging consumption will only fuel inflation in the economy. आपकी economy में सिर्फ inflation
इंक्रीज होगा, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा इट वोंट इनकरेज कंजम्पशन, आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन थोड़ी बढ़ेगी अगर आपके रैपिड इन्फ्लेशन हो रहा है. सो देयर विल बी एडवर्स या देयर विल बी नेगेटिव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी. इसी के साथ साथ अगर आप कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो इन जनरल और आपके पास स्टिल रिसोर्सेज अवेलेबल है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन होगा. सही है, तो इन्फ्लेशन होता रहेगा. इन्फ्लेशन के होने से आपकी रियल वैल्यू ऑफ मनी विल गो डाउन. रियल वैल्यू ऑफ मनी इफ इट गोज डाउन देन देयर विल बी fall in consumer confidence. So you need another policy. Yeah, you can sort of encourage investment in the economy. सही, अगर आप encourage करते हो investment को, there will be an outward shift of the aggregate supply. आपकी aggregate supply बढ़ सकती है. या you can encourage the supply side policy. सही, all together. आप जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन को encourage करो ताकि आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़े. सही, ताकि आपके पास जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बढ़े. सही है. Did you guys get it? This is what you will write in your evaluation. Okay. Although the policy of encouraging consumption or encouraging consumer expenditure will increase the real GDP, can keep the real GDP growth rate at 6.6% for China, but it can lead to inflation, or it can lead to exhaustion or depletion of the resources. It can lead to hyperinflation if the economy is at full employment level of output. So then the government may need another policy, such as, for example, encouraging investment, such as public expenditure on infrastructure, on healthcare, on education, in order to increase the productive potential. सही है.